Power set. Power set is a set which contains all the subsets of a given set. एक सेट गिवन है हमें A, B and C और हमें इसका पावर सेट बनाना है. पावर सेट क्या होता है? जिसमें तमाम पॉसिबल, ऑल पॉसिबल सबसेट्स आर इंक्लूडेड. एक सेट है जिसके जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे उस पावर सेट में मौजूद होंगे और उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया है. क्या है वो फॉर्मूला? दैट इज 2 विद द पावर ऑफ n. n क्या है? n is a number of elements in the given set. कितने एलिमेंट्स उस सेट में गिवन है, whether 2, 3, 4, how many elements? So 2 with the power of n. Example, a equals to a, b and c. फॉर्मूला हमने इसका लगाया 2 पावर n. n यहाँ पे 3 है तो 2 with power of 3 will be 8. So there must be 8 subsets. Now as we construct the power set, one important thing, a null set is a subset of every set. हमें क्या बनाने हैं? सबसेट्स ही बनाने हैं ना. So a null set is a subset of every set. हर सेट का लाजमी सबसेट होगा नल सेट. सो एक एम्प्टी सेट हम बनाएंगे हर दफा जब हम पावर सेट बनाएंगे. आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग एन एम्प्टी सेट, नाउ ए, बी, सी इंडिविजुअली ये तीनों अलग अलग सबसेट्स में आएंगे और तीनों ही सबसेट्स होंगे सेट ए के. Now, after taking them individually, now we will be pairing them. A, B, A के साथ C, फिर B के साथ. Now we cannot take B with A because we have taken it already. I told you order does not matter. Elements matter. A and B are already included, so we cannot make B and A. We can make A with C and B with C. Now we cannot make C with A and C with B because C with A is already presented there. C with B is already there. So we cannot make set like that. And last set. Every set is a subset of itself. हर सेट अपने आप का सबसेट होता है. यानी कि हमारा जो ये वाला सेट है, हमारा सेट ओरिजिनल जो सेट है वो अपने आप का सबसेट है. सो हमने इसको भी सबसेट्स में इंक्लूड किया. आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी. Now let's start with a question from your book. See page number 18, question number 3, part 2. X and Y as the elements of the set. Starting with the solution. Let's assume this set as set A. Set A equals to X and Y. Now before generating the subset, we have to use the formula. What was the formula? Formula was 2 with the power of n. In this question, what is n? N is equals to 2 because n is the number of elements in the given set. And how many elements are given in this set? 1 and 2. So n is 2. Now 2 power n means 2 with the power of 2, which means 2 multiplied by itself for 2 times. This gives 2 multiplied by 2 is 4. This means we have to generate 4 subsets for this power set. Now let's make the power set.
P, which denotes power set, and A is the original set. Now, opening the power set, remember two things when generating our power set. First, every power set has a null set, or it can be said as null set is the subset for every set. हर सेट का एक सबसेट नल सेट जरूर होगा. So, first subset for our power set will be an empty set. Empty set और null set एक ही बात है. Second subset will be the element x. Individual elements के साथ subset बनाएंगे. Third subset with element y. And now the fourth and the last subset will be x and y together. Now, second thing to remember is every set is a subset of itself. हर set अपने आप का subset जरूर होगा. So, two things are compulsory while making a power set. First is an empty set and second is the original set, because every set is a subset of itself. And now, closing the power set. See, the required number of our subsets was 4 and we have generated the required number 1, 2, 3 and 4, and this will be our answer. Now let's do one more part from this question. See question number 3 part 5, which have A, B, C and D as elements of the set. Now starting with the same procedure, that is assuming the given set as set A equals to A, B, C and D, and using the formula that was 2 power n. Now in this set what is n? So n equals to 1, 2, 3 and 4. So n equals to 4. 2 power n means 2 power 4. That means 2 is multiplied by itself for 4 times. 2 2s 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So answer is 16. The required number of subset for this power set is 16. We have to make 16 subsets. Now let's start generating our subsets. P, that denotes power set, and set A, that is the original set. Let's start. First subset is an empty set. As I told you before that the null set is a subset for every set. This is compulsory. Now second, individual elements, A individually, B individually, C and D. इंडिविजुअल सबसेट बनाने के बाद हम एलिमेंट्स को पेयर में सबसेट बनाएंगे. एलिमेंट्स की पेयरिंग के साथ सबसेट बनाएंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद ए. A with B, A with C and A with D. Pairing A के साथ हो गई, अब B के साथ. Now we cannot make B with A because A के साथ हम B का सबसेट बना चुके हैं, and while making subset we have to make sure
कि हम एलिमेंट्स को रिपीट ना करें, हम सबसेट्स को रिपीट ना करें. एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं, सबसेट रिपीट नहीं हो सकते, बिकॉज वाइल मेकिंग सबसेट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर. चाहे हम ए को पहले लिखें, बी को बाद में लिखें, बी को पहले लिखें, ए को बाद में लिखें, एक ही बात है. सबसेट के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता. ए भी पहले हो सकता है, बी भी पहले हो सकता है. तो ए और बी साथ आ चुके हैं, सो अब बी एंड ए नहीं आ सकते. नाउ बी के साथ हम सी का सबसेट बनाएंगे, बी के साथ हम डी का सबसेट बनाएंगे. नाउ we are done with the B. Now C. C हम C के साथ भी A का सबसेट नहीं बना सकते, as we have already made it A and C. तो हम C और A का सबसेट नहीं बना सकते because order does not matter. C के साथ हम B का सबसेट भी नहीं बना सकते because हम B के साथ भी already बना चुके हैं, B and C. So C is only left with element D. Now can we make D subset with the element D in pairing? No, because we have already done with A and D, B and D and C and D. तो D and D का तो सबसेट नहीं बन सकता. पेयरिंग हो गई. नाउ अब हम तीन तीन के सबसेट्स बनाएंगे, तीन तीन एलिमेंट्स के. दैट मीन्स स्टार्टिंग विद A with B and C, A with B and D, and A with C and D. Now with element B. क्या हम B के साथ A को ले सकते हैं अब? No, we have already taken A in every set. Now B with C and D. B के साथ C and D दोनों के बन गए. Are we done? No. Now if we have taken C, तो हम C के साथ भी बना चुके हैं. A C D का भी ट्रायो बन गया, B C D का भी बन गया. तो अब हम B C D के साथ, अब हम इसके साथ कोई एलिमेंट नहीं ले सकते. नाउ लेट्स काउंट कि हम कितने सबसेट्स बना चुके हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. And the required number was 16. Only one subset is left. So what will be that subset? We have discussed earlier that every set is a subset for itself. यानी कि हर सेट अपने आप का सबसेट होगा. तो क्या हमने इसका सबसेट बना लिया यहाँ पे? No, we haven't yet. So now the last subset will be A, B, C and D. Now the required number of subset are generated. That was 16. Closing the power set, and this is our answer.